Yes, sir. So today we will start with more of the let's say visualizations which are available. We will understand how we can use them also. Okay. Now basically, if you look over key influencer, what exactly key influencer means is that in your data, if there's anything which is influencing, for example, quantity is a thing, or let's say for example, if you take a store's data, which is our orders data. In this orders data, we already know that data is with respect to the sales. Sales कितना ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, कैसे हुआ है. These are all what it details speak about the data. Now, what are the factors that are influencing? This sales quantity or the amount of a sales is getting influenced based on discount, based on how much quantity has been sold, isn't it? Based on this, because if maximum or more quantity has been sold, your sales will be good. If higher discount would be given, and again it's a question mark whether your sales has been increased or decreased, because sometimes it happens that, for example, if you're giving more of a discounts, that product is something like that, okay, whether that product is good or not, that type of comprehensive thinking comes in a mind whether we should be going for that amount of discount, because that product might be might not be that much as good because they are giving that much of discount. There's something like thought that could be coming in our mind. So giving a huge discount also is one of a let's say bad approach. And yes, overall less discount will also give a less attraction to other particular individuals. So we have to think about it. So how this discount has been influencing your sales? To understand that, this is our influencer. You can take quantity also, any number which you want or any column. But how that particular value is influencing our sales value is which we can understand by key influencer. Okay, let us understand how it works. We will go through the data and then we will get that example. Let me accept the first this input. Okay, and they are also in our meeting. Session is also been recorded. Now let's go over it. Now, how to get this? So you just have to click on this key influencer option. Click on that, and there you go. With this, see, it specifically says select or drag fields. If you look over the data, you can find that it specifies that select or drag the fields to populate the visuals. And on the right side, you will see that it specifies analyze, add a data fields here. You want to field, add over here, and explain by. Now you want it to be explained by. Now expand by means on what particular, how much scale below or up you want to bifurcate the data, so that can be expanded, or on which factor you want to explain the data, that can also be choose. Okay, so let us understand how this things works. So first thing first, what we'll do, we'll select the data, which particular data we want to work. Okay, so orders table, which is sample superstore data, that is much more suitable for that. So what we will do on analysis, I will say I want to analysis sales. Why sales? Because we need to understand how the sales are been working on. Now, on basis of what? Explain by what? I want it to be explained by, let's say I will say discount. I'll put it over here. Explain by discount. It will take some time. Yeah. Analysis has been done. Okay. Now, it has done by itself. Everything that analysis was required is being done by itself Power BI. Okay. Now, what is there? See, what influences sales to increase or decrease? What it has understood? Based on that, this sales influence. What we are doing over here, we are comparing sales value. If what increases, if what decreases, and how it has been influenced by discount. Okay, so let us understand if it increase. Okay, this someone, let me just accept the request. Okay. Okay. Now what we are doing analysis over here is that, see what influences sales to increase or decrease. Then you have an option over here. You can choose any one of them. Over here we are increasing. It says that when increase, the sum of discount is been observed that discount is at initial 2 and will increase. मतलब क्या हुआ है? Average sales increased by this much. जब आप discount 0 2 से लेके मतलब 2 20% percent basis में.
अगर आपका डिस्काउंट 20% से 50% पे आता है, you have you have gathered the information, you have checked, you have analyzed that the sales increased by this much amount or this much value. Okay, now what if it decrease? Let us understand that also. What if it decrease also? Let us understand with that. What if it decrease? Okay, now see, it has been also observed that when influence sales to decrease. Okay, what influence, मतलब ये जो है सेल्स को इन्फ्लुएंस कैसे करता है डिक्रीज के लिए? सम ऑफ डिस्काउंट इज देन 0.5, जब सम ऑफ डिस्काउंट इज मोर देन, मतलब अगर आप देखोगे कि 50% ज्यादा होता है, द एवरेज सेल्स इज डिक्रीज बाय दिस मच. सम ऑफ डिस्काउंट, टोटल सम ऑफ डिस्काउंट मतलब क्या उसमें हो सकता है कि 2, लेट्स से मैं इसका 20% हो सकता है, 10% हो सकता है. जब इसका सम ऑफ टोटल आप देखोगे, इफ यू गेट 50% ओवर हियर, तो you'll find that कि anyhow sales is decreased, the average sale is decreased by this much value, 169.7. Okay, so this is, we can understand that discount is playing a huge role on a sales. Discount is playing a huge role in a basis of sales. Now if you want to confirm that, हम क्या करेंगे, इसके बाजू में एक और कॉलम चार्ट निकालते हैं, just for the purpose of understanding that. Which I will create a stack clustered column chart. That would be better. Yeah, clustered column chart, and over here I will take sales. नहीं, सॉरी, स्कैटर प्लॉट करूंगा ना, दैट वुड बी बेटर. या स्कैटर प्लॉट करता हूँ सेल्स और हम डिस्काउंट का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, लाइक दिस. एंड अगेन आई डोंट वांट टू गेट एग्रीगेटेड, सो आई जस्ट डोंट समराइज द डेटा, मेक इट एज इट इज, कीप इट एज इट इज. या दैट वुड बी बेटर. या नाउ इससे क्या इन्फॉर्मेशन हमें गेन हो रहा है, देखो, लेट मी प्रोवाइड यू द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन. सी, ओवर हियर यू हैव अ डिस्काउंट, ऑन वाई एक्सिस यू हैव डिस्काउंट, बढ़ रहा है ना, जीरो से लेके ऊपर क्या क्या हो रहा है, यहाँ 80 तक बढ़ रहा है. मिनिमम 0%, no discounts has been given, and maximum is 80% of discount which is given. Now sales increase हो रहा है यहाँ पे. If you look over here, you will find that as and how your discount is increasing, जैसे जैसे आपका डिस्काउंट बढ़ता जा रहा है, तो आपको ना देखोगे कि 0% डिस्काउंट अगर आपने दिया है, तो देर आर सम सर्टेन प्रोडक्ट्स विच आर गुड, बट उनकी क्वांटिटी देखोगे, फ्रीक्वेंसी, तो इट्स ओवर देयर. उसके आगे देखो बहुत कम है, कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो यस देर आर विच इज वर्किंग ऑन प्रॉपर वे. अदरवाइज आप देखोगे तो व्हेन यू सी दिस फ्रीक्वेंसी ओवर हियर, इट इज कंटिन्यूइंग, ये कंटिन्यू है, इट्स सेल मीन्स 20% डिस्काउंट देते हैं तो क्या है, सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स क्या है, इस तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग. देन अगेन 40% डिस्काउंट, बढ़ रहा है. नाउ अगेन 50% में देते हो, समवेयर इन बिटवीन, तो भी है. 60% में इतना नहीं है, means there are some products which are in which you are giving 60% of discount, but still it is not been giving that much of sales. Okay, so that is there. Again, there are some products on basis of 70% when you are giving discounts, it is helping to increase your sales, because हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए, it is has to be like this only, sales बढ़ना चाहिए, है ना. Now when you look over here at this point, as we have discussed that when you talk about 50% of sale, this is a 50% of discount ना, तो यहाँ पे देखो, it has increased the sales up to this much. Now again it could be outlier, हो सकता है, but say this is the value 20,000 यहाँ पे है, it can be again let's say 30,000 or 40,000 के करीब हो सकता है value. This means that 50,000 is something which you are giving an let's say discount, so you can expect that much sales. Now again which particular product is, it's again analysis, we have to do that, but you can find that yes, when you give 50% of discount, your sales is up to 30,000 or something like that, which is again was shown over there. Okay, इस तरह से हमें पता चलेगा. Now this is again scatter plot, जो अल्टरनेट बेस से हमें पता चल रहा है. यही चीज हमें क्या किया कि इन्फ्लुएंसर ने बताया है, जैसे हमें इंक्रीज करता होगा, इसको मोड करता हूँ, ये देखो जो हमारा डिस्कस हुआ, देखो 34 समथिंग, ना 30 से ऊपर है 34 समथिंग वैल्यू. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. नाउ अगेन I just want to get the value. Chart क्यों नहीं आ रहा है? There should be a chart also. Why it's not coming up? I don't know. It should be. यहाँ पे क्या आता है कि एक चार्ट भी आता है, ऐसे नहीं, यहाँ पे किसी चार्ट भी आता है कि किस तरह से वर्कआउट हो रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? That's what I'm searching for.
कहीं गलती से मैंने बंद तो नहीं कर रखा है? नहीं, हाँ हाँ भाई, कुछ शायद मैंने चेंज किया है, दैट्स व्हाई देखो इस तरह से वैल्यू आएगा। इट सिंपली सेज दैट, क्योंकि चार्ट थ्रू ज़्यादा आसान होता है ना, तो वहाँ पे मुझे जाना नहीं पड़ता अगर यहाँ पे चार्ट आ गया होता तो। सो इट सेज दैट व्हाट इन्फ्लुएंस सेल्स टू इंक्रीज, मतलब आपका डेटा आपका सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या इन्फ्लुएंस करता है। तो हमने डिस्काउंट देखा, तो अगर डिस्काउंट में 20% से 50% में अगर बढ़ाता हूँ तो क्या होता है। तो ऐसे में पता चलता है, बिकॉज ऑफ अ ग्राफ ऐसे पता चलता है कि सेल्स आपका बढ़ जाता है 34,000 समथिंग, इट्स अगेन वैल्यू जो भी है ऐसे वैल्यू से। इसका डिटेल भी आपको पता चलेगा यहाँ पे। Sales is more likely to increase when sum of discount moves from 20% to 50% than otherwise on average. And again, it's an average. So देखोगे आप यहाँ पे ओवरऑल एवरेज एक्सक्लूडिंग सेलेक्टेड जो भी वैल्यू है ना, ये वैल्यू देखोगे एवरेज सेल्स आप देखोगे यहाँ पे। सो जीरो टू ये लेस है परसेंट है डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट है, 15 to 20% है, 20 to 50% है। यू कैन सी दैट इट इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहे हैं। अगेन मोर देन 50 में इतना वर्कआउट नहीं है, जो हमने डिस्कस किया था आगे। दिस इज 20 to 50 जो चार्ट है आपका, लेट मी गेट दैट आल्सो, स्कैटर प्लॉट थ्रू वहां पे भी है, बट अगेन दिस विल मेक सेंस। जो 20 से 50 तक का जो चार्ट है, ये वाला जो हम पोर्शन की बात कर रहे हैं, दिस इज ये वाला, ये यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा ये सेल्स है और सबसे बेस्ट सेल्स है, ज्यादा ज्यादा देखोगे। दिस इज वेर एरिया वेयर मैक्सिमम डिटेल्स में, मतलब जहाँ पे ज्यादा ज्यादा आपका चेंजेस हो रहा है, दिस फैक्टरीज हो गया। बिकॉज सी 60 से आगे जाओगे तो इट्स वेरी लेस, भले ही है कुछ पर यहाँ पे सेल्स बहुत कम है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका सेल्स का पार्ट चल रहा है, दिस रेंज। यहाँ पे भी है बट अगेन का जीरो पे ही है, बट यहाँ पे 10-20 का कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा। मीन्स वेर यू आर यूजिंग 20 to 50% ऑफ डिस्काउंट, इट इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग आवर सेल्स। ओके, कैसे पता चला अगेन कि इन्फ्लुएंसर से। नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा कॉलम उसमें यूज करना है। इट्स नॉट कंपल्सन कि मुझे यहाँ पे यही चाहिए। अगेन इफ यू थिंक कि नहीं मुझे क्या लगता है कि सेल्स मतलब डिस्काउंट की जगह देयर कुड बी ऑल्सो सम क्वांटिटी है ना, तो आप क्या कर सकते हो उसे, लेट्स से change that sum of discount and I'll say put say over here, let's say quantity आ जाएगा। Now again same question raise, what influences sales to increase, मतलब सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, यहाँ पे इंक्रीज की हम सर्च कर रहे हैं ना कि इंक्रीज करने के लिए क्वांटिटी कैसे कर रहा है। सो सम ऑफ क्वांटिटी इज मोर देन 7 व्हेन योर सम ऑफ क्वांटिटी इज मोर देन 7 व्हिच इज अगेन क्वांटिटी इन बिटवीन 4 to 7 के बीच में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 7 से ज्यादा है तो सेल्स ज्यादा है, और उससे अगर छोटा है उससे कम है तो सेल्स कम है। दिस मीन्स दैट सेल्स इज मोर लाइकली टू इंक्रीज व्हेन सम ऑफ क्वांटिटी इज मोर देन 7। ऑब्वियसली ज्यादा क्वांटिटी रहेगा सेल ज्यादा रहेगा, कम से क्वांटिटी रहेगा कम रहेगा। दैट्स वेरी लॉजिकल है ना, जो आपको पता चला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। सो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको पता चला। ऑन एन एवरेज क्या है आपका एवरेज सेल्स में देखोगे तो दिस इज योर वैल्यू ऑन एन एवरेज का जो सेल्स है, दिस इज योर एवरेज सेल। उससे अबव है, उससे क्या है आपका अबव यहाँ पे, और नीचे देखो कैसे पता चला। सी 4 से 7 क्वांटिटी देखोगे तो एवरेज से अबव आता ही है, लेकिन मोर देन 7 रहेगा तो इट इज हैविंग हायर चेंजेस चांसेस। वेरज यहाँ से देखोगे नीचे एवरेज के नीचे जितने भी ये वैल्यूज है सब एवरेज के नीचे, मतलब एवरेज सेल से नीचे 1 क्वांटिटी 2 और 4 तक जितना भी वैल्यू है एवरेज के नीचे रहेगा। भले आप 4 क्वांटिटी भी बेच लो फिर भी क्या है एवरेज सेल से नीचे रहेगा। 4 या 4 से अबव वैल्यू रहेगा तो आपका सेल्स में कुछ अच्छा इफेक्ट होगा। Is it clear guys? Are you getting my point? What I'm saying, what I'm trying to convince over here? Yes, sir. Yes, sir. Okay, देखो यहाँ पे भी सेम है वही। प्रॉफिट के बारे में वापस से मैं, प्रॉफिट नहीं सॉरी, प्रॉफिट तो बाद में आएगा, नॉट रिक्वायर्ड। डिस्काउंट देखना था ना मैं, या हियर देखा। अब ये जो एवरेज है ना, ये बाइफरकेट करने में आसान करता है। दिस सिंपली सेज दैट एनी वैल्यू, देखो कोई भी सेल्स है ना, एवरेज सेल से हमें एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है, एवरेज परफॉर्मेंस। एवरेज परफॉर्मेंस मतलब क्या है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग नॉर्मली यहाँ तक पहुंच ही जाते हैं कैसे भी करके। वेरी एवरेज, किसी भी बिजनेस में किसी भी काम में एवरेज से अबव वैल्यू हमें चाहिए होता है। परफॉर्मेंस बोलो या सेल्स बोलो, किसी भी बेसिस में एवरेज से अबव होना चाहिए। तो ये एवरेज वैल्यू क्या करता है, इट एक्ट एज अ कट ऑफ। ये कट ऑफ वैल्यू एक्ट करता है। कट ऑफ वैल्यू क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। इससे ऊपर रहेगा अच्छा, इससे नीचे रहेगा आई एम नॉट से बुरा, बट अगेन एवरेज से नीचे है। सो ये एवरेज वैल्यू क्या डिफाइन करती है, आपको इन्फॉर्मेशन देती है। इट सिंपली सेज दैट जीरो जहां पे नहीं दिया है
और 0 से 15 यहाँ पे है, देखो 0 से 15 के बीच में अच्छा सेल्स है, इट्स नॉट अगेन, बट अगेन 15 से 20 के बीच में जो आपने डिस्काउंट दिया है, इट्स नॉट वर्किंग एज पर, वो एवरेज से नीचे ही है, यहाँ भी नीचे ही है, इतना ऊपर नहीं है, नीचे ही है। और 50 से अबव तो भाई इतना है, मतलब अल्टीमेटली क्या है, यू आर हैविंग दिस वैल्यू। अगेन उसमें भी 0 to 15 क्यों है, देखो अगर 0 से 15 अगर आपका वैल्यू होता कि जो अच्छा वर्कआउट कर रहा है, तो 15 से 20 जहां पे अपने सेल है उसके भी अच्छा होना चाहिए था, बट अगेन इट बिकम्स लोअर। इट मींस दैट this value 20 to 50 और 20 to 50% of discount is working in a best way, in a best method, ये ऐसे करके की आगे वही है। कॉलम चार्ट निकालोगे तो यही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा, हिस्टोग्राम वगैरह बिल करके देखोगे तो यही मिलेगा। ओके, सो अगेन की इन्फ्लुएंसर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स यू इट्स ओन एनालिसिस। ओके, और आपको वो इन्फॉर्मेशन प्लेस करके देता है। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड दैट। ओके, नाउ अगेन वी हैव समथिंग कॉल्ड डीकंपोजिशन ट्री। ओके, आई क्लिक ऑन दिस। डीकंपोजिशन ट्री क्या करता है, देखो, सी सेलेक्ट और ड्रैग अ फील्ड टू पॉपुलेट द विजुअल्स। ओके, सेम अगेन यहाँ पे क्या करना है हमें, नाउ अगेन एनालिसिस करना है। एक्सपांड बाय किससे करना है, यहाँ पे देखो, सॉरी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन बाय किससे करना है, और एक्सपांड का इन्फॉर्मेशन है, टूल टिप मतलब जहाँ पे मैं कर्सर लेके जाऊंगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। सो एक्सप्लेन बाय व्हाट, नाउ अगेन आई वांट टू चेक सेल्स, which is further I want to explain it by let's say category। ओके, सम ऑफ सेल जो है कैटेगरी की बेसिस पे मुझे एक्सप्लेन करके दीजिए, लेट मी जूम इट आउट, किस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगा, ये क्या है, देखो यहाँ टोटल सेल्स का इन्फॉर्मेशन आ गया, टोटल सम ऑफ सेल ऐसा आ जाएगा। अब जब मैं इसे क्लिक करूंगा प्लस साइन पे, देखो चूज हाउ टू स्प्लिट द डेटा, हमने क्या दिया देखा है, सिर्फ कैटेगरी, यहाँ पे और भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई पुट, अभी नहीं पहले कर लेता हूँ, सो सम ऑफ सेल से मैं इसे प्लस करता हूँ, कैटेगरी दे रखा है हमने, सी हाई वैल्यू, लो वैल्यू और कैटेगरी। नाउ यहाँ पे डायरेक्टली हाई वैल्यू, ये कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके ऊपर, ओके, इट सिंपली डिफाइंस कि हाई वैल्यू दिखाना है, लो वैल्यू नहीं, हमें ऐसे आपकी जो डिफॉल्ट है वो वैल्यू नहीं चाहिए। आई वांट कैटेगरी। ओके, नाउ लेट्स से इफ आई रिमूव दिस, ये वैल्यू आ चुका है, यहाँ पे प्लस साइन कुछ भी नहीं आ गया, सिर्फ एक वैल्यू आएगा। ओके, आई वांट दिस कैटेगरी ओवर हियर, पुट इट लाइक दिस, ये वैल्यू आ गया प्लस साइन। ओके, सो प्लस साइन कैटेगरी बेसिस में कीजिए स्प्लिट, हाई वैल्यू लो वैल्यू, हाई वैल्यू क्या करोगे तो क्या होगा, आप क्लिक करो यहाँ पे, देखो टेक्नोलॉजी का उन सब में, तीनों कैटेगरीज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, टेक्नोलॉजी की, हमें पता है, सम ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ हाईएस्ट वैल्यू। ओके, इस तरह से आपको आउटपुट मिल जाएगा। देन अगेन नहीं चाहिए, ऊपर देखो कैटेगरी है, इसे क्लोज कर दो, गेट बैक। अगेन लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू ऑब्वियसली ऑफिस सप्लाईज का है कंपैरेटिवली, तो लोएस्ट वैल्यू दिखाएगा। इस तरह से आपको हाईएस्ट और वैल्यू, तो अगेन मुझे क्या करना है, कैटेगरी में स्प्लिट कर दो, तो देखो कैटेगरी यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, लोएस्ट वैल्यू कौन सा, ये नहीं बता रहा है। ये बार देखो, बार दिख रहा है, ये बार ब्लू कलर का है, उसके पीछे ग्रे कलर का थोड़ा सा एक बार है। इट डिफाइंस की, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है ना, सेल्स की मैक्सिमम वैल्यू तीन हिस्सों में डिवाइड हुई है, तो इन तीनों में हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, 836, इसलिए ये पूरा भरा हुआ है। विथ कंपेयर टू दिस टेक्नोलॉजी वी आर कंपेयरिंग फर्नीचर एंड वी आर कंपेयरिंग ऑफिस सप्लाईज ऑल्सो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, आपका जो सम ऑफ सेल्स की जो वैल्यू है, ये जो टोटल वैल्यू जो आई है, इसमें पार्टीशन है ना, इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है टेक्नोलॉजी कैटेगरी का, फर्नीचर कैटेगरी का और ऑफिस कैटेगरी का भी। सो विद दिस रिप्रेजेंटेशन it has been bifurcated into three categories with its total value, sum of value. You will see that this value over here is having a contribution of 8,36,154 from a technology. Same goes for furniture with this amount, and same goes for with this office supplies. Now, with the highest value over technology, it simply says that this value will be your bar limit from minimum to maximum, because this is the highest value. Comparing to this value, we are going to compare office supplies. That means this value will be 8,36,000, which is office supplies has cope up with 7,90,000. मतलब उसका बार यहाँ तक है. Furniture is having this much value, a bit more than this office supplies, but this is your value which will having a comparison. तो ये बार कहाँ से आया, हाईएस्ट वैल्यू एंड कंपेयरिंग विद दिस। ओके, नाउ अगेन हमने डिसाइड नहीं किया है कि विच पर्टिकुलर वैल्यू हैज टू बी शोन ओवर एज अ लोएस्ट एंड बेसिस, बट वी हैव कैटेगराइज्ड नथिंग अदर देन दैट। ओके, सो इफ यू वांट हाईएस्ट एंड लोएस्ट, you can do that also. You can further expand also. You can further expand also. For example, if I put over here, let's say segment नहीं करता हूँ, let's say sub category है ना, that would be better one. If I put sub category over here and see, you can see that, okay, just let me zoom it first. Yeah,
Subcategory over here, I can drag over here and I can put it over here. Explained by. See, there is a green line which simply says that it is below. It is going to be placed under category. If I had to put above, I can get that green mark, green line over a category, which will say that it will be placed over. But for my requirement, it is below. Place it like that. Now, as and how I place that, see, I'll close this first one. Okay, yeah. And I click this. See, you have options over here. Earlier it was not there. But now we can categorize on basis of category also and subcategory. You can directly click on subcategory also. See, it directly comes with subcategory. Again, the highest value will be this much, which further will be compared with that value as a baseline. Okay, now again, let's say in further in phones, if I click plus category,